Welcome back to my channel. I am Garima Singh signing in for today's lecture. Before we start today's chapter, let me just give you a brief what we have done till now. Okay, so we have understood the concept of economy, what is economics, and the central problems of the economics. Okay, after that we have done the consumer equilibrium analysis in terms of utility analysis and in terms of indifference curve analysis. Now, today we'll switch to our next chapter, which is all about theory of demand. Okay, all these keywords that are being again and again used in economics is been very well explained by me in my very first video. So guys, if you haven't watched the very first video of introduction to microeconomics on my channel, make sure you guys go and see it. I will be linking the link of that video by the end of the video. Okay, so that it is easy for all of you to go and see the video. Now, coming to this chapter, today we'll discuss about theory of demand. थ्योरी मतलब किसी चीज के बारे में आज पढ़ेंगे, थियोरेटिकल उसमें पढ़ेंगे. ओके भाई, क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ रिलेशन रहता है डिमांड का. एंड डिमांड इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नाउ. फर्स्ट विल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट व्हाट इज डिमांड ऑल अबाउट. When I say desire and demand in our day-to-day life, or normally if people talk, desire and demand is interchangeably used. Okay, desire और demand दोनों एक ही मतलब रखते हैं for a layman who is in the economy using this word in his daily life. Okay, desire demand मतलब एक जैसे ही एक दूसरे के लिए यूज किए जाते हैं. But when we talk about economics, or in economics when we talk about the term desire and demand, these are two different things. Okay, and now let's understand what is the difference between desire and demand. When I say desire in economics, it means I have willingness to buy but have no money. Okay, मतलब मैं कोई चीज खरीदना चाहती हूँ but मेरे पास पैसे नहीं हैं. Okay, therefore desire is what? It is a wishful thinking. काश मेरे पास होती is what is desire in economics. Okay, and when I say demand in economics is when I have the willingness to pay and also have the money to buy it. Okay, and is paying the money. It will consist our demand in economics. तो डिमांड क्या हुई? अगर मेरे पास पैसे हैं और मेरी चाह भी है और मैं उसको खरीदती हूँ, दैट विल सम अप द डिमांड. और अगर मैं बोलती हूँ सिर्फ मुझे खरीदना है और मेरे पास पैसे नहीं है, मैं डिजायर करती हूँ उसको. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर सो दैट द कांसेप्ट इज मोर क्लियर टू यू गाइस. फॉर एग्जांपल, दिस इज अ कार, आई वांट टू बाय अ कार. ओके, मैं डिजायर किसको बोलूंगी? व्हेन आई हैव विलिंगनेस बट नो मनी. ओके, मतलब चाहती हूँ खरीदना पर पैसे नहीं है, दिस इज माई डिजायर. बट अगर मेरे पास उसको खरीदने की चाह है, विलिंगनेस है, ऑल्सो आई हैव द मनी टू बाय दैट कार, इट विल सम अप माई डिमांड. आई होप द डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड डिमांड इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग डिमांड ओनली. ओके, अब हम बात करेंगे डिमांड एंड द क्वांटिटी डिमांडेड. ओके, when I say demand, let's first understand demand होती क्या है. अभी हमने समझा, when we have the willingness and the money to buy a commodity. Okay, as we all know, demand is all the way similar to the quantity purchased. डिमांड हमारी क्या रिफ्लेक्ट करती है? अभी कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड हमने परचेज की है, दैट विल सम अप आवर डिमांड. ओके, जब हम डिमांड की बात करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर जो डिमांड ऑफ अ कमोडिटी है, इट डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी. ओके, अगर मैं बोलूं कि डिमांड हमारी पैसों पे डिपेंड करती है ऑफ द प्राइस ऑफ दैट गुड, ओके, तो दिस विल बी ट्रू. लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर सपोज करो आपको पता चलता है सेल लग गई है मार्केट में, आपको पता है कुछ डिस्काउंट मिलेगा, प्राइसेस नीचे आ गए, एवरीबडी विल रश टू द स्टोर्स टू बाय थिंग्स. ओके, तो दिस इज व्हाट, दिस शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. कि प्राइस अगर नीचे आया, इफ प्राइस केम डाउन, डिमांड विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज. ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. सपोज इन द स्टोर यू गो एंड यू सी सेल जो है लिमिटेड आइटम पे है, बट द आइटम्स यू वांट टू बाय आर इन द फ्रेश कैटेगरीज. ओके, आर द न्यू कैटेगरी. ओके, so there is no discount. Therefore, will you go and buy the fresh category of the commodity? No. You will first go and look around the
सेल कमोडिटीज. ओके, सो क्योंकि फ्रेश कमोडिटी का हमारा प्राइस हाई होगा, देयरफॉर उसकी डिमांड भी हमारी कम है. विल वेट फॉर द राइट टाइम. Once the sale should come, and then I'll go and buy this fresh commodity in the sale. Okay, so this is the relation between demand and price, that if the demand is more, कब होगी डिमांड मोर, तो हमारा प्राइस कम होगा. और हमारी डिमांड कब हमारी कम होगी, when the demand will be less, when our price will be more. This shows the inverse relationship between the two. When I say inverse, it means अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा. ओके, दोनों की डायरेक्शन अलग रहेगी. एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर, अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो डिमांड क्या हमारी ऊपर की साइड जा रही है. दिस शोज द इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड द डिमांड. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिमांड. सो डिमांड इज व्हाट? डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज टू बी परचेज्ड एट डिफरेंट प्राइस. Demand will consist of all the different possible quantities that the consumer has bought at different prices. ठीक है भाई, जितनी बहुत सारी डिमांड्स होती हैं, तो ये तो है नहीं भाई एक कमोडिटी से लाइफ चलती है हमारी. Therefore, demand sum up all the different possible quantities that one consumer has purchased at different price. Okay, whereas when we talk about quantity demanded, it means it is referring to the specific quantity of a commodity that the consumer has purchased against a specific price. So when I say quantity demanded, मेरा मतलब है कि मैं एक particular quantity of a commodity बात कर रही हूँ जो मैंने at a specific price और a particular price मैंने खरीदी थी. Okay, whereas demand हमारी किसकी बात करते हैं? सारी all the possible quantities. Okay, now let me give you an example so that the difference between quantity demanded and demand is clear to you all. Okay, let's take an example. If I say, if a consumer bought 10 unit of good X at price 5 unit, 8 unit of another good at price 4 unit, and another unit of another good at rupees 3 unit. Okay, so all of this unit in total will sum up my demand, because demand is what? Different possible quantities at different possible price. Okay, whereas when I say quantity demanded, I will be talking about a particular commodity of at what quantity and at what price I have bought that commodity. Okay, so specifically if I talk about this specific quantity at specific price, for example, मैंने कोई गुड 6 यूनिट में खरीदा, it is the specific quantity, and at rupees 3 rupees per unit, ये मेरा specific price हुआ. This will be termed as quantity demanded. I hope, oh my, is clear to you all. Now difference between demand is all the sum up of the different commodities at different quantity and different prices, whereas quantity demanded talks about a specific quantity at a specific price. Okay, now coming to the next topic, which is demand schedule. Okay, so by now I think it is clear to you all that whenever we will be talking about schedule in economics, here will be referring to a table. Okay, therefore demand schedule क्या होगा? A table showing the relationship between different quantities purchased at different prices. Okay, अब हम इसको अगर tabular form में represent करेंगे, demand की between the relation of different commodities that has been purchased at different प्राइस, अगर हम उनको इन सब कमोडिटीज की रिलेशन जो है प्राइस के साथ अगर हम उसको टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, इट विल गिव अस द डिमांड शेड्यूल. ओके, देयर इज दिस इकोनॉमिस्ट सैमुअलसन. ओके, ही सेड दैट द टेबल रिलेटिंग टू द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड is called the demand schedule. Okay, so if you want to make your answer perfect and very up to the mark in economics, you need to mention the name of the economist if an economist is related to the concept or has given the definition regarding the concept. If you do so, there are higher chances that you will score full marks. Okay, so you can, if you encounter a question regarding demand schedule in the exam, therefore you need to mention the statement of the economist Samuelson, that what Samuelson has told us about the demand schedule. Okay, now
Moving ahead, we'll see that demand schedule, this concept is again divided into two parts. One is individual demand schedule and the second is the market demand schedule. Now let's see what is an individual demand schedule. When I say individual, as the name only suggests, we'll be talking about a particular consumer or the buyer or an individual one. Okay. So individual demand schedule is what? It refers to the individual buyer or consumer's demand schedule in the market. Okay. It shows schedule है तो table show करेगा okay of different commodities quantity at different price what a consumer or buyer as an individual has bought in the market. Okay. Now let me explain this using a example here. Okay. Suppose go to the market and buy different commodities in the market. Okay. Say मैंने अभी I bought a pen, a copy, some eatables, some clothes. Okay. So all of the different commodities, quantity that I have bought at different price in the market will sum up my consumer, my demand schedule. Okay, individual demand schedule. Okay. So this is clear. Now let's take another example using a tabular form. Let's see this table. Here this shows the price of the commodity and here shows the quantity demanded by the consumer. Okay, if I say I bought one commodity at price 1 and unit that I have bought is 4 unit. Okay, so you will see there are different 4 combination of different commodities that I bought at different prices and different quantity that I have bought. Okay. So I have presented my demand in the form of a table which will show my individual demand schedule. Okay. Schedule is what? The tabular form of my tabular representation of my demand schedule. Okay. Now coming on to the result. As we all know that demand have inverse relationship with the price. Okay. So if more of the प्राइस एंड दी क्वांटिटी डिमांडेड, हमने यही पढ़ा है ना कि इनवर्स रिलेशनशिप है हमारे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर. इफ द प्राइस विल गो अप द डिमांड विल कम डाउन और द क्वांटिटी डिमांडेड विल कम डाउन एंड इफ द प्राइस कम डाउन द डिमांड विल गो अप. ओके, सो दिस इज द थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड while studying the theory of demand as it forms the base of theory of demand. So as you can see from the table, when the price goes on increases, पहले 1 था फिर 2 हुआ 3 4, when the price increased the quantity demanded of the good decreased. Okay, it was 4 then came to 3 then 2 and 1. So when the price will increase it will lead to the quantity demanded will decrease. Okay, therefore the above table shows the quantity demanded at different price by an individual who is a consumer or buyer in the market. Okay. Now moving on to the second type of demand schedule, which is about the market demand schedule. Okay, as you all know, market is a place where we have many consumers. We do not talk about only one individual, we talk about different consumers. Okay, so as the name suggests, market demand schedule means it shows different quantities at bought by different prices will sum up my market demand schedule. Okay, different people buying different commodity at different price in a market will sum up my market demand schedule. And always remember that there is an inverse relationship between the price and the quantity demanded. This is the base of our chapter which is called theory of demand. जब भी हमारा price और quantity की बात होगी in the chapter theory of demand, will always remember their relationship that it is inverse. अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चेंज नहीं होते हैं, एक बढ़ता है तो दूसरा गिरता है and vice versa. Okay, so as you all know, schedule means that tabular representation. Therefore in the market demand schedule will also go for the table form. Okay, now let's assume this table we have price of that commodity, consumer 1 quantity that is the quantity that is being purchased by consumer 1 and here the commodity that is being purchased by consumer 2. Okay, so what is market demand? Market demand is the summation of all the demands of the consumer in the market
And here you need to remember one more thing, that there are only two consumers in the market. As I have told you in my very first video about the term assumption. Assumption क्या है? कोई भी theory को simply explain करने के लिए हम कुछ चीजें assume करते हैं. Okay, so here what we have assumed that we have only two consumers in the market. Okay, which is consumer 1 and consumer 2. So that it become easy for us to explain the theory, as it is not possible to take all the consumers here in this table and making this process of understanding very complex. Okay, therefore the assumption is that there are only two consumers. Okay, now coming back to the table, here we have price and here we have the commodities purchased by the two consumers. Okay, so you can see there is an inverse relation between the price and the quantity demanded by them. Okay, the price went on increasing, the quantity will automatically go on decreasing. Okay, so now let's talk about the market demand. जब हम मार्केट डिमांड की बात करेंगे तो टोटल डिमांड और द टोटल मार्केट डिमांड विल बी द समेशन ऑफ डिमांड ऑफ कंज्यूमर 1 and the quantity demanded by consumer 2. Therefore, let's take the very first example. Price 1 था, consumer 1 was demanding 4 unit and consumer 2 was demanding 5 unit. Okay. When I individually talk about consumer 1 or consumer 2, it means I am talking about the individual demand schedule. Whereas when I will sum up both the unit and the outcome will be known as the market demanded quantity. Okay, or the market demand schedule. So it will be 4 unit plus 5 unit equal to 9 unit, and similarly in other case you can figure it out from the table itself. So what is the result here? That the market demand, what is the market demand here? Summation of all the consumers in the market demanding different commodities at different price. Okay, so summation of the quantities demanded by different consumer will sum up our market demand. And always remember, this is something which I am reminding you again and again, so that this thing gets into your head and you do not forget while studying the theory of demand, that demand is inversely proportional to the quantity demanded or the price of the commodity. Okay, so important क्या है? If the price will increase, demand will go down, and if the price decrease, demand will go up. Okay, now let's talk about the demand curve and its slope. Okay, so when I say curve in economics means the graphical representation. Okay, so demand curve will be the graphic representation of our demand schedule showing different quantity purchased and the price of that commodity. Okay, here also we'll study the demand curve in two categories, which is individual demand curve and market demand curve. So I think I have explained the individual concept of demand schedule, so need not to repeat it again. Now let's just quickly see how to plot it on the graph. Okay, so on my y-axis I have the price and x-axis I have the quantity. So जैसे जैसे price decrease होगा, quantity keep on increasing. Similarly I have plotted it here. Price, when price was 4, my quantity demanded was 1. 3 पे 2 थी, 2 पे 3 and 1 पे 4. So after plotting, I'll get a line here like this, which will become my demand curve. Okay, so here you notice that demand curve slopes downward. That demand curve is coming downward. नीचे की side आ रहा है from left to right. Okay, so what is the reason behind the downward sloping demand curve? It is the same because the quantity demanded is inversely related to the price. Quantity और price का relation is inverse. Therefore, demand slopes downward. This is individual demand curve. अभी एक की बात कर रहे हैं ना. This is for one consumer. Means we are talking about an individual consumer. So this will be our individual demand curve. Remember, demand is inversely proportional to price of the commodity. Now let's see the market demand curve. It is all the way same. It is also the graphical representation of our demand. Which demand schedule? Market demand schedule. Okay, so this is my consumer 1 demand schedule. This is my consumer 2. When I combine both the consumer 1 and 2 demand schedule, I'll get the market demand curve. Okay, so this is the same. So what we got to know here, that जो schedule है, demand schedule जो था, that represent our
market demand schedule in the tabular form. Okay, schedule is always in the table form, and when we talk about the curves, it is the graphical representation of the market demand schedule or individual demand schedule. Okay, जब हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो कर्व बन जाएगा, और टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो स्केड्यूल बन जाएगा. ओके, प्लीज प्रैक्टिस more of such diagrams, because your answer is incomplete without this figures, this curves. Okay, हर theory में हर curve के related you guys are supposed to give the graphical representation as well as the tabular presentation. Okay, practice really hard so that in exam you don't face any difficulty in making such graphical representation regarding the concept. Now moving on to the slope of demand curve. Slope क्या है? When one thing will change, in relation to that one thing, how the other things will change. The change is called the slope. So here what are we talking about in theory of demand? We are talking about the relation of price and the quantity. Therefore slope will be negative sign change in price by change in quantity. Negative sign here is used because we have inverse relation between price and commodity. So let's see the graphical representation. Suppose I have price on y-axis and quantity on x-axis. Okay, and dd is my demand curve. If I say I have to find out the slope of this demand curve, so I'll see the change in price. Point A से point B पे आने तक मेरा कितना change of price हुआ है और कितनी change of quantity हुई है. Okay, that will define my slope of the demand curve. Here, so here it is. हमारा slope क्या होगा? माइनस ए बी बाय बी सी मतलब चेंज इन प्राइस कितना हुआ एंड चेंज इन क्वांटिटी कितना हुआ, दैट विल डिफाइन अवर स्लोप ऑफ डिमांड कर्व. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिमांड फंक्शन. When I say function, it means the factors on which the demand is dependent upon. Okay, now again demand function is divided into two categories: individual demand function and the market demand function. Let's first see the individual demand function. When I say individual demand function, it depends on the factor, or it is function of price of the commodity, price of the related commodity, income of the consumer, taste and preference, and expectation. So when I say demand is function of price of its own, okay, so अगर मैं कोई commodity खरीदती हूँ तो demand मेरी किस पे डिपेंड करती है? जो commodity मैं खरीदने वाली हूँ उसका प्राइस क्या है? So the number one factor is the price of own commodity. जो कंज्यूमर खरीदने जा रहा है उसी का प्राइस क्या है, उस commodity का प्राइस क्या है. If the price is high, demand will be low. If the price is low, the demand for the commodity will be high. Now coming on to the second factor, which is price of related goods. When I say price of related goods, there comes the concept of substitute goods and the complementary goods. Now when I say price of related goods, मतलब एक दूसरे के प्राइस से फर्क पड़ेगा उन वाली commodities, उन वाली goods की बात करेंगे. तो here the goods can be divided into substitute goods and complementary goods. Substitute goods वो है जो एक की जगह दूसरे यूज किए जा सकते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल टी और कॉफी. वेरेस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? जो एक दूसरे की डिमांड को फुलफिल करेंगे. ओके, सो सब्स्टिट्यूट मतलब एक दूसरे को हटा के यूज कर सकते हैं. कॉम्प्लीमेंट मतलब एक दूसरे के साथ अच्छे से जाएंगे. ओके, सो नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन. Substitute goods are the goods which can be interchanged for the use. Okay, always remember जो एक दूसरे की यूज की जगह यूज किए जा सकते हैं उनको हम substitute goods बोलेंगे. जैसे कि if I like tea और टी के प्राइस ज्यादा हो जाते हैं चाय पत्ती के, I'll easily switch to coffee. ठीक है ना, तो कॉफी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. सिमिलरली अगर मुझे पेप्सी पसंद है, पेप्सी के प्राइस ज्यादा हो जाते हैं, मैं क्या सोचूंगी? इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग पेप्सी आई शुड स्विच टू कोक. ओके, सो मेरी डिमांड फॉर पेप्सी विल ऑटोमेटिकली कम डाउन. सो अनदर थिंग हियर इज इफ द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स गोज अप, द डिमांड फॉर द गिवन गुड जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो इंक्रीज होगी. ओके, क्योंकि अगर किसी के प्राइस कम हो ज्यादा होंगे तो हम उस चीज को नहीं खरीदेंगे. एग्जाम्पल से समझाती हूँ. जैसे मैं टी कंज्यूम करती हूँ, ठीक है, टी का सब्स्टिट्यूट क्या है? मेरा कॉफी. ओके, अगर मेरे कॉफी की प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, ओके,
तो मैं क्या कंज्यूम करूंगी, टी। मैं टी ज्यादा कंज्यूम करूंगी। पहले बीच बीच में कभी कॉफी ले लेती थी, लेकिन अब कॉफी बिल्कुल भी नहीं लूंगी क्योंकि कॉफी के प्राइस इंक्रीज हो गए हैं। ओके, देयरफॉर अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो जो कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। पहले तो हम खरीद ही लेते थे थोड़ा बहुत कुछ, अब बिल्कुल ही नहीं खरीदेंगे क्योंकि प्राइस ज्यादा हो गया है। ओके, नाउ कमिंग टू द कॉम्प्लीमेंट्री गुड। ये वो वाले गुड्स हैं जो एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करते हैं। ओके, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड ऑफ द गिवन कमोडिटी विल कम डाउन। क्यों? क्योंकि दोनों गुड एक साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, एग्जाम्पल लेती हूँ पेन और इंक। पेन में मेरी अगर इंक खत्म हो जाए, पेन चलना बंद हो गया। ओके, therefore here ink is the complementary good for my commodity pen. ओके, अगर मेरे इंक की प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इंक महंगी होगी, तो मैं क्या पेन यूज करूंगी? नो, क्योंकि इसके भी तो डिमांड पे फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों मिलके ही चल रहे हैं। therefore कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड का रिलेशन इनवर्स रहता है, वेयर अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें तो प्राइस और डिमांड में हमारा पॉजिटिव रिलेशन रहेगा। ओके, थर्ड फैक्टर हियर इन डिमांड फंक्शन इज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। भाई कंज्यूमर कितना कमाता है, उसकी इनकम क्या है। ओके, so when we talk about the income of the consumer, here we talk about the two goods, normal good and inferior good. Okay, so these are very important terms. You should be very well aware of these terms in economics क्योंकि बारी बारी रिपीट होंगे। Substitute and complementary goods, normal and inferior goods. Okay, now let's first see the normal goods. Normal goods क्या है? जिनका इनकम के साथ और हमारा पॉजिटिव रिलेशन होगा। ओके, द रिलेशन बिटवीन द इनकम एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड आर पॉजिटिवली रिलेटेड। ओके, नाउ दिस मे और मे नॉट बी एसेंशियल फॉर लाइफ। जरूरी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं लाइफ के लिए। ओके, एंड प्राइस, व्हेन आई से प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ ओन गुड का इनवर्स रिलेशन है। प्राइस सॉरी इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड का हमारा पॉजिटिव रिलेशन है। ओके, व्हेन आई से इंफीरियर गुड का मेरा नेगेटिव रिलेशन है बिटवीन गुड एंड इनकम। अगर मेरी इनकम इंक्रीज होगी तो मैं इंफीरियर गुड्स कंज्यूम करनी बंद कर दूंगी, लेकिन अगर मेरी इनकम इंक्रीज होगी तो मैं नॉर्मल गुड को कंज्यूम करना ज्यादा प्रेफर करूंगी। ओके, inferior goods are essential for life and may or may not be in inverse relation with the price and the quantity. Okay, now let me give you example so that the concept of normal and inferior good is clear to you all. अगर मैं बोलती हूँ मेरी इनकम कम है, ओके, तो मैं सिर्फ दाल, आटा, वीट, इस बेसिक चीजों को कंज्यूम कर रही हूँ अपनी लाइफ में और उसी से गुजारा कर रही हूँ। therefore वीट, दाल एक्सेट्रा दिस विल बी माई इंफीरियर गुड हियर। Whereas अगर मेरी इनकम इंक्रीज हो जाती है तो मेरी गुड्स की डिमांड भी अलग होगी। अब आई गो एंड कंज्यूम पास्ता, मैगी, चॉकलेट्स, वेरियस अदर थिंग्स इन द मार्केट, क्योंकि अब मेरी इनकम ज्यादा है, आई कैन गो एंड कंज्यूम व्हाटएवर आई वांट नाउ। ओके, तो ये एग्जांपल हुआ नॉर्मल गुड का। अनदर एग्जांपल लेती हूँ, मेरी इनकम कम है, मेरे पास पर्सनल कन्वेंस नहीं है अपनी, सो आई प्रेफर ट्रैवलिंग बाय बस, ऑटो रिक्शा, इट मीन्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रही हूँ। Whereas तो मेरी इनकम इंक्रीज हो जाती है, I have enough money now, so I go for my personal car, personal vehicle. Therefore, this is the difference between normal good and inferior good, which means normal good have positive relation with the income, whereas inferior good have negative relation with the income. And when we talk about the price and quantity relation, in case of normal good, it is inversely related, whereas in case of inferior good, it may or may not be inversely related. Okay, another factor here in demand function is the taste and preference of the consumer. So every consumer go and buy the commodity according to his own taste and preference. Okay, अपनी पसंद के हिसाब से खरीदेगा। अदर थिंग इज एक्सपेक्टेशंस, कि उसको उस कमोडिटी से क्या उम्मीद है, कि उसको लगता है क्या उसकी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी उसको कंज्यूम करके, क्या उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स के हिसाब से वो कमोडिटी उसको satisfy कर रही है कि नहीं. So all of this factor constitute as the demand function. It means an individual demand depends on the factors like price of the own commodity, price of related commodity, income of consumer,
taste and preference of consumer and expectation of the consumer. Now talking about the market demand function, तो सेम रहेंगे ये भी फैक्टर्स यहाँ. प्राइस, मार्केट डिमांड डिपेंड ऑन और इज फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड, income of the consumer, expectation, taste and preferences of the consumer. Plus, here we'll add two more factors, which is one is N. N here stands for population or size of the buyers. Okay. अगर हमारे number of buyers in the market or in the economy is large or is more in number, our demand for that commodity will automatically increase. एग्जाम्पल, अगर मैं बोलती हूँ कि पॉपुलेशन डिमांड कर रही है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ बायर्स है, ऑल ऑफ देम वांट टू बाय कार्स, तो डिमांड फॉर कार्स विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज. ओके, तो डिमांड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द साइज ऑफ द बायर्स. अगर बायर्स ज्यादा है हमारे तो हमारी डिमांड भी ज्यादा होगी. Another factor here is distribution of income. When I say distribution of income, भाई इनकम कैसे बंटवारा किया गया है. I mean in our economy there is an inequality. अगर inequality होगी तो rich will become richer और जितने अमीर है वो ज्यादा अमीर होते जाएंगे. Therefore demand for the luxury goods, पैसे वालों की डिमांड ज्यादा होगी. लग्जरी गुड्स मतलब BMW कार खरीदेंगे, they will go and buy diamonds. Okay, तो luxury inequality exists, the rich is becoming richer and poor is becoming poor. अगर poor और ज़्यादा गरीब होंगे तो demand for inferior goods will increase. Now time for tone your brain. So here are your questions which you guys are supposed to answer in the comment section. Number 1, define demand schedule. Number 2, define demand curve. Third is demand is dashly related to the quantity demanded. फोर्थ इज डिमांड फंक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल. डिमांड फंक्शन देना है आपको इंडिविजुअल डिमांड कर्व का एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द मार्केट डिमांड फंक्शन. That's it for today's video, guys. Do not forget to like, share and subscribe to my channel, and most importantly please press in the thumbs up button under my video, and those who haven't subscribed to my channel till now, please make sure you subscribe to it so that every time I post a video you guys have a notification. Okay guys, I am Garima Singh signing off from today's session. See you very soon. Thank you so much.